Good evening, everyone. So this is the Mathematics Source channel. Now the topic is lecture 2, complex number. Complex number. Numbers. So as for in the first video, I have discussed regarding the complex number and imaginary numbers and how they come into existence. Now I have discussed about the iota, and I have already discussed that I to the power 4k is equal to 1, where k is integer, and I to the power 4k plus 1, it is equal to I, and then I to the power 4k plus 2, it is equal to minus 1, and then I to the power 4k plus 3, it is equal to minus I. This was discussed in my first video. Just a recap I have given over here. So now I have given more emphasis what is imaginary number. So I have already told in the earlier video that any number, any real number is multiplied by the fundamental imaginary number, that is the number iota, which is invented by the Euler, gives the imaginary number. So suppose that if I am going to write root under minus 5. Root under minus 5, it means that it is square root of negative real number. So square root of negative real numbers, and you know that what are the negative real numbers. So suppose that I am just drawing a number line, and here is the 0, and this is minus infinity, and this is up to plus infinity. So all the numbers lying between minus infinity is less than x, and x is less than or equal to 0. It means that it is a लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 जो है क्लोज्ड होगा. तो ये सारा जब नंबर जो है ये आपका नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर. तो नेगेटिव रियल नंबर जब होगा, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर होगा, स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव रियल नंबर ऑलवेज गिव्स एन इमेजिनरी नंबर. और complex number, we can also say that a complex number, all imaginary numbers are complex number, all real numbers are also complex number. So complex number is the set of complex number is denoted by C, and it is such a number, suppose x plus iy, where x belongs to the real number, as well as y also belongs to the real number, y also belongs to the real number, but and
I is equal to iota is equal to root under minus 1. So this is the form. So any number which can take this form is known as the complex number. So complex number is the combination of just addition of real number and imaginary number. It does not it is not strictly I am telling that every complex number has a real number as well as imaginary number, because all the real numbers whose imaginary parts are 0 are complex number, and all the numbers whose real parts are 0, all imaginary numbers are also complex number. But see here, suppose I am writing 1 plus I. So 1 plus I means 1 is a real number and 1 plus root under minus 1. So this belongs to where? C is what? C is the set of complex number. Similarly, if I am taking 2 plus 3i, 2 plus 3i means 2 plus 3 into root under minus 1. So if we will write, this is imaginary number. How? Because it is the square root of negative integer, negative real number. So minus 1, and then here is 3 square, so it will become 2 plus root under minus 9. So it belongs to C. So therefore it is also a complex number. So any number, suppose that I am writing 7 minus 4i. So 7 minus 4i can be written as 7 minus 4 into root under minus 1. So it is equal to 7 minus root under minus, and then it is 4 square. So it is equal to 7 minus root under minus 16. So belongs to C. So it is the combination of the two numbers, 7 and root under minus 16 is imaginary number. So now if I am writing that 5 plus 4i, so it is 5 plus 4 root under minus 1 iota, and this is equal to 5 plus, and we will take minus 1, and then it is 4 square. If you will take inside the bracket 4, then you have to put the square, because square root will then cut the square, and we will get the minus 4. So in this way, 5 minus root 5 plus minus root under 16. So here it is imaginary number, and this is the real number. So it is the real part and it is the imaginary part. So where I is written, a real number is multiplied with I, it always gives imaginary number. So complex numbers are those forms of number which is in the form of x plus iy or a plus ib, you can say, where x belongs to real number and y belongs to real number. But if anybody asks that what is the value of iy, so iy is always an imaginary number. Iy is imaginary number because y is the real number and it is multiplied with I. So real number is multiplied with fundamental imaginary number or unit of imaginary number. It always gives imaginary number. So any real number, when a real number, just I am concluding it that suppose that a real number, I am taking a real number, and a real number is multiplied by iota, and suppose real number, and suppose that it is non-zero real number, we can take. So real number is multiplied with root under minus 1. It always gives imaginary number. Imaginary number matlab root under minus square root of negative number. So here the real number is except 0, because if you will take 0, then 0 will become 0, purely real number it will come. So suppose I am just taking root 2 into I.
So root 2 into I means root 2 into root under minus 1. So it is equal to root under minus 2. So root under square root of minus 2, it is which type of number? It is imaginary. It belongs to the imaginary number, and it is also a complex number. It is also a complex number because this can be written as 0 plus root 2i. 0 plus root 2i. So here x is equal to 0 and y is equal to root 2. So complex number, we can write also, we can define also, complex number is the pair of two numbers, two real numbers a and b, such that x is equal to, or z is equal to a plus ib, where a belongs to real number as well as b belongs to real number. So ab ordered pair है. AB is the ordered pair where A is represent the real part of the complex number. So real part of the complex number Z is A here, and the imaginary part of the complex number is B. Imaginary part is B. So only B is real number, but IB is imaginary number. Now we are coming to the algebra of complex number, how to add, addition, subtraction, multiplication, division. We will discuss right now. So here is algebra of C. C means set of complex number. Set of complex. Just a minute. It is not working properly. Algebra of complex numbers. So here we will discuss about the algebra of complex number. तो यहाँ पे देखिए, suppose that I am taking first one, Z1 is equal to A1 plus IB1. ठीक है? A1 and B1 are the real number, I is iota, and Z2 is equal to A2 plus IB2. It means that we have to add this A1, Z1 plus Z2. So this you will just add A1 plus I B1 and A2 plus I B2. So it is equal to real part से आप add करेंगे, we will add, and then take I common, so B1 plus B2. So here if we are adding, the sum of the two complex number is also a complex number. So Z1 is C, Z1 belongs to C, and Z2 is also belonging to C. Z2 is also belonging to C. Therefore, Z1 plus Z2, it is also belongs to C, set of complex number. So it is closure property also. Closure property holds in the sum of complex number. Now here, so you will have to just add it. Suppose I am taking one example, simple example, just Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 5 plus minus 7i. So Z1 plus Z2 आपको निकालना है, देन रियल पार्ट को रियल पार्ट से आप ऐड करें, तो ये 7 हो गया और ये प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4i. ये आपका हो गया एडिशन. नाउ सिमिलरली जैसे मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z1 और Z2 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 प्लस आई B1 माइनस A2 प्लस आई B2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा a1 माइनस a2 एंड देन प्लस I b1 माइनस I b2. सो a1 माइनस a2 प्लस I b1 माइनस b2. ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है. Now see, so subtraction of the complex number z1 minus z2 is equal to a1 minus a2 plus I b1 minus b2. तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ. तो सपोज कीजिए इसी में हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है इन दोनों को. तो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 की जगह में 2 प्लस 3i लिखेंगे, जैसे अरिथमेटिक में करते हैं सब्ट्रैक्ट, उसी तरह से इसमें भी करना है यहाँ पे. तो 2 प्लस 3i एंड देन माइनस 5 प्लस 7i माइनस माइनस प्लस हो गया. ये आपका हो गया कितना, तो इट इज इक्वल टू it is minus 3, 2 and minus 5 minus 3 and this is plus 10i. So subtraction of two complex number is also a complex number, so it is also a C. Now see here, now we are coming to the multiplication of the two complex number. Multiplication of two complex numbers. Suppose z1 is equal to a1 plus I b1 and second is z2 is equal to a2 plus I b2. This is the theory. So z1 z2, it is equal to multiplication of these two, so a1 plus I b1 into a2 plus I b2. ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 a2 हो गया एंड देन I a1 b2. ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से. दिस एंड दिस विल मल्टीप्लाई I b1 a2 and then I into I square plus I square b1 b2. So b1 b2, as you know that I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1. So here a1 a2, from these two we can take I common, so a1 b2 and b1 a2, and here in place of I square put minus 1, so minus b1 b2. So here these two parts in the last one both are real, so a1 a2 minus b1 b2 plus I a1 b2 and b1 a2. So we see that it is also a complex number. This is the real part of this complex number and this is the imaginary part of this complex number. So this is the real part and this imaginary part. So we see that if we multiply the two complex number, we will get also this also belongs to a complex number. So it means that in multiplication the complex number also follows closure law of multiplication. Here multiplication holds in complex number in C. C means complex number. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. z1 is equal to 3 plus 4i and z2 is equal to 5 plus 12i. Then z1 z2 is equal to 3 plus 4i into 5 plus 12i. इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे 3 into 15 and then 36
I, then it is 20 I, and then it is 48 I square. Now it is 15, and this is I square is equal to minus 1, so it is minus 48, and this is equal to 56I, and since here I am writing just I square is equal to minus 1, I square minus 1, so it is equal to, it is minus plus minus minus, and then we'll just subtract over here. So here it is 3, and then it is 2 minus 32 plus 56I. So see, the product of the two complex number is also a complex number, so it satisfies the closure property for the multiplication. So now here next we will see, and the fourth part is, this is the third part, because addition and subtraction we have discussed. Division of two complex numbers, so z1 by z2 is equal to what? But it is provided that z2 is not equal to 0, means 0 is a complex number, so z2 cannot be 0. This, so for explaining this, I am going to explain that what is conjugate of complex number. Suppose z is equal to I plus a plus ib, so conjugate of this complex, conjugate of z, this complex number is conjugate of z is denoted by z bar. Z is a complex number over here, and conjugate of z is denoted by z bar. So only आपका साइन बिटवीन द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट जो है जो आपको चेंज कर देना है. तो a प्लस a माइनस आई बी हो गया आपका कॉन्जुगेट. तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? conjugate of z is denoted by z bar, and it is equal to a minus I b. Only sign you will have to change, and a bar दे देंगे. ठीक है, बार, ठीक है, ये दे देंगे. अब यहाँ पे देखिए, अगर if we will take z is equal to x minus iy, देन इसका कॉन्जुगेट जो होगा z बार, z1 मान लेते हैं ये, तो z1 बार इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. साइन चेंज कर देंगे बीच का, ये काम करना है खाली कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में. अब देखिए, अगर मान लेते हैं कॉन्जुगेट है z, ये वाला से हम लोग देखें तो z बार जो कॉन्जुगेट है z का, तो यहाँ पे a माइनस आई बी अगर लेते हैं, अगर इसका कॉन्जुगेट ले लें, अगर कॉन्जुगेट ऑफ z बार ले लें तो बार में फिर बार दे देंगे. दिस इज द conjugate of z bar is the conjugate of z, and then we are taking the conjugate of z bar, so again it is coming a plus ib, so again it is coming z, so we can write z. So this is also a relation, z conjugate of z, it is equal to same z, which is here a plus i b. ये भी एक रिलेशन आ जा रहा है. अभी यहाँ पे एक तो चीज़ और भी हम लोग देख ही लें जब देख रहे हैं तो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज कीजिए यहाँ पे लिए थे a प्लस आई बी, एंड दूसरा लिए इसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी. तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू जेड बार, तो सी वाट इज कमिंग a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ये आ रहा है.
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में ये ब्रेक हो जाएगा, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, so a square, then it is minus 1 b square, so it is equal to a square plus b square. So now z bar, it is equal to a square plus b square. Now we will see what is the modulus of complex number, and after that we will do the division of the complex number. So see here, Argand plane, or it is also called gaussian plane. So the plane in which complex numbers are represented is called Argand plane plane or Gaussian plane. This plane consists of two axes, x dash axis called real axis, and y dash axis called imaginary axis, because in x dash axis we will represent real numbers, and in y dash axis we will represent imaginary numbers, purely imaginary numbers. So now we will, and both are perpendicular to each other. I suppose that y dash, and here x dash, ये लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 and so on, then -1 -2 -3 -4 and similarly it is -5 and so on। ये चला, ये आपका ये जो एक्सिस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल एक्सिस, इसलिए कि सारा नंबर इसमें क्या होगा, रियल नंबर्स होगा, आइदर रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो। तो रियल एक्सिस में जो भी नंबर रिप्रेजेंट होगा वो रियल नंबर होगा, और इमेजिनरी एक्सिस में जैसे मान लेते हैं इक्वल इंटरवल है, ये आई लिए, ये 2i लिए, जनरली लिखा नहीं होगा i, हम जान के लिख रहे हैं समझ जाने के लिए। इट इज 3i and then it is 4i and so on, so it is -i here, and then -2i and then -3i and so on over here, ऐसा होगा। इसका मतलब ये 1i है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये आपको इसको ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा
इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 और y भी 1. तो it is an order pair 1 1. So it means that it represents a complex number 1 plus 1i, 1 plus 1i, और 1 plus simply 1 plus simply i ये रिप्रेजेंट करेगा. और मान लीजिए हम लेते हैं अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं 3i से चले जाते हैं ऐसे पैरेलल टू, और यहाँ से 4 से परपेंडिकुलर चले जाते हैं. इसमें हम लोग x एक्सिस के पैरेलल जाएं या y एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएं, तो हम लोग ये पॉइंट मिल रहा है. सपोज कीजिए ये पॉइंट ए था, इस पॉइंट को हमने बी माना, तो x कोऑर्डिनेट इसका 4 है और y कोऑर्डिनेट 3 है. 3 है मतलब 3i है रियल पार्ट. तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू रियल नंबर in which the first part represent the real number and the second is imaginary part. So it is equal to 4 plus 3i. So यहाँ पे देखिए दोनों जो ऑर्डर पेयर का रियल पार्ट है सब है, मैंने x और y या a b आप कह सकते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सारा पॉजिटिव दोनों होता है. लेकिन यहाँ पर एक इमेजिनरी है, यहाँ पर एक रियल पार्ट है इमेजिनरी नंबर. तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गन प्लेन हो गया पूरा. अब मान लीजिए यहाँ इधर आ जाते हैं -2 में आ जाए और इससे परपेंडिकुलर चले जाते हैं और इससे परपेंडिकुलर चले जाते हैं. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जाने पर सपोज कीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं p आया, ठीक है. तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2 and 3. तो -2 and 3 किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? -2 plus 3i को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो इसका मतलब रियल पार्ट इसका जो है नेगेटिव हुआ और इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव हो रहा है, यानी 3 पॉजिटिव हो रहा है. अब यहाँ पे हम लोग जैसे -4 में चले जाते हैं और यहाँ पे -3 में चले जाते हैं. यहाँ पे सपोज कीजिए एक पॉइंट मिला Q, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा -4 एंड देन -3. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा -4 -3i होगा, ठीक है. तो यहाँ पे i से मल्टीप्लाई खाली कर दीजिएगा, देन यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस i बाई और a प्लस i भी जो कह लीजिए, तो इस फॉर्म का है. तो यहाँ पे आपका दोनों नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव में आ रहा था, ठीक है. तो इस तरह से होगा. और यहाँ पे हम लोग जैसे 3 में ये 2 में चलते हैं, 2 में चले और यहाँ पे सपोज कीजिए इसमें चलते हैं, यहाँ पे ऐसे बीच में एकदम ठीक बीचों बीच में 2i और 3i के बीच में 2.5i होगा. तो यहाँ पे आपका देखिए 2,2.5 लिखते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 plus 2.5i, इसका मतलब हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2 plus 25/10i. तो इसका मतलब हो गया आपका 2 plus 5 2 i इतना हो गया. इसको अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 plus 5i/2 है. यहाँ पे ये आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दैट r. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्गेंट प्लेन, अर्गेंट प्लेन कहेंगे. दिस इज द अर्गेंट प्लेन और इट इज आल्सो नोन एज गॉसियन प्लेन. नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडुलस एंड argument of a complex number suppose z, it is equal to a plus ib. मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. Now we are coming to the topic modulus and the argument of the complex number, where the complex number z is equal to a plus ib, where a is real number and b is also a real number, but bi is imaginary number. Now suppose that I am taking a
argand plane y o y dash, and this is x o x dash, and here P is any point I am taking in the first quadrant and whose coordinate is A and B. It means that if we will draw the perpendicular from P on x-axis, PM is perpendicular over here, and then so this distance will be along A, OM is equal to A, and the distance perpendicular distance is B. This. So this is the Cartesian coordinate, as you know. If we will join over here, and this is the angle, suppose that this angle is in the anti-clockwise direction and this angle is theta, which is formed in the anti-clockwise direction because the clock moves in this way and this angle is moved in this way. So this is called positive angle. So all the angles which are made in trigonometry, we will discuss about the positive and negative angles. The positive angles are those angles which is formed in the anti-clockwise direction. So now let P be the point represents a complex number as ordered pair AB, means this represents a complex number A plus IB. Therefore, from P perpendicular, PM is perpendicular on XO x dash axis and OM is equal to A and PM is along the y-axis, so it is B. Now theta is here, I have taken theta is equal to angle POM. It is equal to taken as theta, which is formed in anti-clockwise direction. Angle formed in anti-clockwise direction. Angle formed in anti-clockwise direction, and or we can say that it is positive angle, and this positive angle theta, this positive angle theta is called amplitude or argument of complex number Z. Suppose this is Z. This complex number is Z. So now it is a right angle triangle. In triangle POM, C OP square is equal to OM square plus PM square, and OM is A square and it is B square. So OP is equal to root under A square plus B square. So यहाँ पे ये जो हो गया root under A square plus B square हो जा रहा है. तो OP is called modulus of complex number. Here it is modulus of complex number. Modulus of complex number को हम लोग represent करेंगे mod of Z, and it is equal to root under A square plus B square. यानी modulus of complex number Z is equal to root under
a square plus b square, where z is equal to a plus ib, and we can also write it is real part of z का whole square, इसका square, and then it is imaginary part of z का whole square. ये आपका हो रहा है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये आपका आ जा रहा है. नाउ हम लोग डिस्कस करें एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट of complex number z over here a plus ib. Suppose here I am taking tan theta. In the next page I will do it, or here I can take just a minute. Here I am just taking because page is less here. So now theta is argument. Theta is argument. Argument is the angle which is made by the line joining the origin to the particular point which represent a complex number in the positive direction made by the angle with the positive direction of x-axis. So it is argument of complex number z, and it is suppose that I am taking tan theta. Tan theta is equal to what? Tan theta is equal to perpendicular by base. So perpendicular is b by base. So in the first quadrant a and b both are positive. So here tan theta is equal to, in class 12 we will study about inverse trigonometric function, but here we will discuss. So we will take the modulus of this. In every case we will here take the modulus of a by b. Or suppose that it is x and xy, then it is y by x. So in many books theta argument is equal to tan inverse arg लिखते हैं argument को argz. It is equal to theta, and it is theta is equal to tan inverse mod of b by a, but b by a इस तरह से हम लोग argument निकालेंगे. Argument of complex number निकालेंगे हम लोग इस तरह से, इस फार्मूला से भी इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यूज़ करेंगे इसका. और मॉडुलस निकालने के लिए तो इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना. मॉडुलस निकालने के लिए एम्पलीट्यूड और मॉडुलस निकाल को इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग, तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप देख लें यहाँ पे कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे आ जाते हैं. तो इसका जैसे मान लेते हैं इसको ए बी ले लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का है? ए प्लस आई बी फॉर्म का है. तो यहाँ पे आपका ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज आल्सो ग्रेटर देन 0, है ना. तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें इससे, है ना, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो आपको सपोज दैट थीटा है या अल्फा है, सपोज कीजिए अल्फा है, तो ये क्या होगा? ये अल्फा जो होगा, ये अल्फा एक्यूट एंगल होगा. ठीक है, एक्यूट एंगल होगा, acute angle होगा, because it lies in the which quadrant? First quadrant. So in the first quadrant, if the complex number lies, then the argument is always an acute angle. Argument जो होगा वो acute angle होगा. So here I am just taken alpha is argument जो होगा किस तरह का एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा. सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -2 और 3. तो यहाँ पे -2 और 3 है, तो यहाँ पे आप ए देखिए आपका क्या है? ए बी से लीजिएगा अगर, तो इट इज़ ए प्लस आई बी हुआ. ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे आपका -2
और b इज इक्वल टू 3 है, यानी a इज लेस देन 0 हो गया एंड b इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इससे, तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ सपोज कीजिए थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो यहाँ पर थीटा जो होगा आर्गुमेंट वो किस तरह का एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये इधर से ये एंगल में जाएंगे और अगर इस साइड से जाते हैं इस एंगल की तरफ तो इसको कहते हैं कोटर्मिनस एंगल। तो यहाँ पे हम लोग इधर से ऐसे जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं, सेम ही एंगल मिल रहा है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग मिनिमम वाला को लेते हैं, हाँ मिनिमम वाला को लेते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा, यहाँ पे आप एक तो चीज़ समझ लें कि अगर हम लोग यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अल्फा। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ये को पॉजिटिव ले लेंगे, ये को भी पॉजिटिव ले लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री से माइनस करके हम लोग को मिल जाएगा आपका आर्गुमेंट। तो इस केस में हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसे हम एक चार्ट बना करके दे देंगे आप लोग को। और सपोज कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा देखते हैं, और उसके बाद फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्यू लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये ए और बी है, और तो ए भी नेगेटिव है लेस देन 0 और बी इज आल्सो नेगेटिव, हाँ लेस देन 0। तो पहले आप अल्फ़ा बराबर निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा निकालेंगे, उसके बाद देखिए इसको अगर हम इससे ज्वाइन करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल बना, ये आपका 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया, लेकिन 360 डिग्री से कम हो गया। तो ये आपका एंगल जो हो गया आपका 180 से ग्रेटर हुआ, और ये 90 से ग्रेटर हुआ तो ऑब्ट्यूज हुआ था, और ये 180 से ग्रेटर हुआ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो है 180 डिग्री से ग्रेटर हो रहा है। तो इसी एंगल को यहाँ इस साइड से एक्स एक्सिस में आने के लिए हमको क्या करना होगा, सेम इसी पोजीशन पे आने के लिए तो हम लोग को यहाँ पे 180 माइनस जो भी अल्फ़ा होगा उसको, ये जो अल्फ़ा है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके लिए आप फार्मूला यहाँ पे लगाइएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट निकालिएगा अगर जेड का, तो उसके लिए आप फॉर्मूला ले लीजिएगा माइनस 180 डिग्री minus alpha, and alpha is the minimum angle. How to find, I will discuss about it in detail, because here trigonometry is used. And now in fourth quadrant, suppose that in fourth quadrant what will happen, suppose R is here, R is the point which lies in the fourth quadrant, and in the fourth quadrant what is happening, A is positive and B is negative. So here A and B, so I am really very sorry over here, this is minus 2.5, so it will be 2 minus 2.5, so here will be minus, here will be minus, so it is minus. Okay, so now A is equal to 2 and B is equal to minus 2.5, so A is greater than 0 and B is less than 0. तो under this condition अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ए आर जी यानी आर्गुमेंट निकालना है जेड का, तो आप यूज़ कर देंगे, फार्मूला लगाएंगे, या तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कीजिए, ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिएगा आर से, और यहाँ पे जितना डिस्टेंस इधर गया है ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है अल्फ़ा, ये इधर आपका आएगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका माइनस अल्फ़ा ले लीजिए, ये सॉरी माइनस अल्फ़ा लीजिएगा, माइनस अल्फ़ा लीजिए, या आपको 360
360 डिग्री ये पूरा हो जाएगा 360 डिग्री, और उसमें यहाँ से लेकर के ये बहुत ये हो गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो ये 360 डिग्री में आपको अल्फा घटाना होगा। तो 360 डिग्री माइनस अल्फा यानी 2 पाई माइनस अल्फा होता है, तो 360 डिग्री माइनस अल्फा आपका आर्गुमेंट निकलेगा। तो आर्गुमेंट निकालने हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन पोलर फॉर्म, because to find the complex number in polar form, it is compulsory for that to find the argument and modulus of the complex number. So hope you will understand it. Now I am coming to the division of the two complex number. Now division of the two complex number. Of two complex number. Suppose numbers z1 is equal to a1 plus I b1 and z2 is equal to a2 plus I b2, where a1, a2, b1, b2 belongs to real number. तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे वो करके दिखाते हैं। तो z1 बाई z2 लेंगे, यहाँ पे a1 प्लस I b1 लेंगे, दिस इज a2 प्लस I b2 लीजिएगा, और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, तो डिनोमिनेटर z2 है, मल्टीप्लाई इन द कंजुगेट आप पढ़ें, कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डिनोमिनेटर, बिकॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि हम लोग को लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बोलिए या x प्लस आई वाई बोलिए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसमें लाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को कॉन्जुगेट से। तो यहाँ पे a1 प्लस आई b1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस आई b2, मल्टीप्लाई करते हैं a2 माइनस आई b2, देखिए इसका कॉन्जुगेट यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, दोनों तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 a2 एंड देन दिस माइनस आई a1 b2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस आई b1 a2, प्लस माइनस माइनस कीजिए, यहाँ पे ए आई b1 b2 हो गया। ये आपको जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो a2 होल स्क्वायर एंड देन आई b2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह में ऊपर में इन द न्यूमरेटर आप -1 पुट कर दोगे, a1 a2, और यहाँ पे इसको लिख रहे हैं हम लोग माइनस ये वाला को -1 एंड b1 b2 एंड देन आई एम राइटिंग आई, यहाँ पे इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, इसमें आपका क्या है आई कॉमन लेंगे तो b1 a2, और ये नेगेटिव के साथ a1 b2 यहाँ लिख देंगे, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया है। तो ये आपका हो गया a2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर। नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आई b1 a2 माइनस a1
b2 ये हो रहा है डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर का जगह में -1 पुट कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस इज a2 स्क्वायर एंड देन इट इज b2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बाइफरकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए z1 बाई z2 यानी हम लोग जो डिवाइड किए हैं वो आपका किस फॉर्म में आ गया, x प्लस आई बाई फॉर्म में आ जा रहा है। तो यहाँ पे x की जगह में रियल पार्ट में ये है और इमेजिनरी पार्ट में आपका ये पूरा होल है, होल आपका इमेजिनरी पार्ट में है। लेकिन y जो है सिर्फ इतना है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ये आपका किस फॉर्म में हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। तो ज़्यादातर आंसर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी एक्स इस फॉर्म में ही लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे आप। तो ये आंसर लिखने का आपको तरीका है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। So now we are coming to reciprocal of a complex number. ठीक, तो now reciprocal of a non-zero complex number. Non-zero complex number because zero is also a complex number, but in जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है तो इसी वजह से जीरो नहीं लेंगे। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मान लेते हैं z इज a complex number x plus iy and z is not equal to 0. When z is not equal to 0, when x is not equal, when x is equal to 0 but y is not equal to 0, and when y is equal to 0 but x is not equal to 0, or when x and y both are not equal to 0. So there are three conditions. So I am not writing this. So simultaneously both are not 0, ये आपका नहीं होना चाहिए। x is not 0 and y is not 0, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो 1/z, 1/z का मतलब 1/x प्लस आई वाई। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ठीक, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x प्लस आई वाई है तो x माइनस आई वाई से a प्लस आई भी होगा, एक ही बात है ना, x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम लोग ब्रेक किए हैं, एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जैसे पुट कीजिएगा, माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर जो है ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं इसको, लेकिन आप बाइफरकेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा और दूसरा आपका आएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर देखिए आप रियल पार्ट ऑफ द complex reciprocal of z, so it is equal to x by x square plus y square, and imaginary part imag, imaginary part 1 by x, it is equal to minus y by x square plus y square। इमेजिनरी पार्ट में आप आई भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि आई लगता है तो ही इमेजिनरी नंबर निकलता है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस रेसिप्रोकल, इट इज इजी।
अब देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जैसे 1/z जो है इज रेसिप्रोकल of complex number z, or this is also known as multiplicative inverse of complex number z, ये भी कहलाता है। अगर यहाँ पे 1/z अभी हम लोग निकाले थे, अब देखिए यहाँ पे आप लोग 1/x इज इक्वल टू यहाँ तक हम लोग लिखे हैं, ये आप समझ रहे हैं, इसको लिख रहे हैं यहाँ से, तो x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी जेड इज इक्वल टू हम लोग लिए हैं x प्लस आई वाई, तो जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड हो जाएगा x माइनस आई वाई, एंड एज यू नो दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू root under x square plus y square. So if we will take the square both sides, so modulus of z square is equal to only x square plus y square. So taking this is 1 and this is 2. We can write in the numerator here z bar divided by modulus of z whole square. So therefore we get one of the result, multiplicative inverse or reciprocal of the complex number z is equal to z bar divided by modulus of z whole square. तो ये भी आपका एक रिलेशन हो जाएगा, एक रिलेशन ये हो जाएगा आपका, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। इसमें डिफिकल्ट जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस दिया जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज कीजिए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 plus I y1 and z2 is also a complex number x2 plus I y2, ये है, तो दोनों इक्वल कब होगा, when z1 and z2 are equal। तो इसके लिए हम लोग x1 plus I y1 is equal to x2 plus I y2, तो ये आप अगर इसको सबको इधर ले आए तो x1 माइनस x2 हो जाएगा और I कॉमन ले लीजिएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस 0 इंटू आई। तो इक्वेट कीजिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो इसका रियल पार्ट ये है, ये इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, ये जो है इसके इक्वल ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट जब रियल पार्ट के बराबर होगा दोनों का, ये हुआ इससे, और दूसरा वाला हो रहा है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल पार्ट पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो, और दूसरा का पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, या आई का कोफिशिएंट्स दोनों का आपस में बराबर हो। तो आप लोग समझ गए होंगे। So now theory part, I will discuss about the properties of the complex number in the next lecture, lecture number 3. So till then, please, I am telling you, requesting you that please like, subscribe, as well as share my videos. You will get the whole theoretical part, as well as then after completion of the theoretical part I will start the problems of the complex number from the various books, as well as from my I have also made the questions. So
I will explain each different type of question. So please view from the beginning to the end of the video. Thank you. Hope you will do this, and as well as please comment that which type of improvement should I may I do, so that you will understand more betterly, and for the improvement of the video. So please comment. Thank you. Bye bye.